बात नहीं हुआ है मेरा। बैंकर्स में कैथलिक सीरियन बैंक, डीसीबी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक एंड जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल भी एनबीएफसी है एक्चुअली। 4 बैंक हैं और 4 बैंक है और 3 एनबीएफसी है, तो 12 एमएफआईज। और सर कोई इम्पैक्ट फंड किसी के फंडिंग है वैसा कुछ किसी को जानते हैं क्या आप? इम्पैक्ट फंड, इम्पैक्ट जो फंड देते हैं, कैस्पियन शायद एक देता है, हेल्थ में देता है कुछ से। नहीं कैस्पियन देता है, यूनाइटेड भी इम्पैक्ट फंड ही है। अच्छा, ओके। देखिए इम्पैक्ट मैडम क्या करते हैं, वो लोग लोन देने का इम्पैक्ट बोल देते हैं, आप वुमन एम्पावरमेंट करो, लाइवलीहुड करो, एग्रीकल्चर करो, लेकिन जो अपने माइक्रो फाइनेंस पे जाता है वो मोस्टली लाइवलीहुड या वुमन एम्पावरमेंट में जाता है। और मान लीजिए यूनाइटेड हुआ या कैस्पिन हुआ, वो एमएफआईज को देते हैं और बाकी कंपनीज को भी देते हैं सोशल, जैसे कि एग्रीकल्चर फर्म हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में हो गया, वो सब वो इम्पैक्ट स्पेस में आ जाता है। ग्रामीण है, ग्रामीण अपना ग्रामीण क्या है वो ग्रामीण इम्पैक्ट है, वो एनबीएफसी वो डायरेक्टली इम्पैक्ट को लर्निंग करता है, उसमें तो मैं काम करता था, तो मुझे मालूम है कि क्या है, तो वो एमएफआईज को तो लर्निंग नहीं करता है। तो मेरा ये पता करना था कि अभी अपना जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, मतलब मेरे को मिलना है या मेरे को नहीं मिलना है, मैं आप लोग का इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से होगा वो मेरे को पता करना था। क्योंकि मैं सेबल से बोल रहा था कि वो जो 8 तारीख का जो आपका इवेंट है उसमें आधा घंटे का मेरे को स्लॉट देते, तो जितने भी छोटे मीडिया एमएफआईज है मैं बता दूंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तुम लोग को फंडिंग के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन को। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैंक ये बोलते हैं कि उनके पास से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम लोग को कंफर्ट नहीं है, वो कहाँ से क्या है वो उससे हमें कंफर्ट नहीं है, तो उसके कारण डिले होता है। कंफर्ट करने के लिए मैंने काफी लोग से बात किया कि कैसे होना चाहिए, फिर मैंने अपना दिमाग लगा के कुछ कुछ बनाया है मैंने कि मान लो अगर मैं लर्निंग करता हूँ तो मेरे को क्या क्या देखना, उस हिसाब से मैंने बनाया। और ये मैंने जितने भी एमएफआईज और बैंक्स और एनबीएफसी से उनसे बात करके बनाया, तो उस हिसाब से ये बढ़ाया बड़ा मान। तो 8 तारीख का कुछ है, कुछ मिल सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, नहीं तो अगर आप फिर सेवा बोला था अगर नहीं है तो फिर हम लोग सारे एमएफआईज के तहत एक बार कॉल कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैनुअल, तो सर बोल रहे हैं कि 8 तारीख को 8 आधा घंटे का स्लॉट अगर उनको मिलेगा तो देन ही कैन एक्सप्लेन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस तो पूरा टाइटली पैक्ड हो गया है ना सर? पैक हो गया ना? हाँ, कि कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रांसपेरेंसी मैनुअल ही। उसके बाद का सर एक लैंडिंग मीट हमारा जो होता है जनवरी में, उसमें फिर वो वहां पे बोलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ वो एमएफआई से ज्यादा बात करना है। हाँ वहाँ पे एमएफआईज को भी बुलाते हैं हम, लेंडर्स में लेंडर्स को तो बुलाते ही हैं, उनको भी बुलाते हैं। और लास्ट ईयर का उन लोगों ने बहुत सारे इश्यूज बनाए थे, इसीलिए हमने सोचा ट्रांसपेरेंसी मैनुअल के लिए, तो देखते हैं। हाँ सर, चलिए, ओके। So business like this. So based on Seval and Sangeeta, I have spoken to around 21 institution. उसमें 12 MFIs हैं, उसमें 12 MFIs में there are MFIs from northeast to the major side. मतलब I have spoken to Sarat Das जी और उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया था, including Assam and all. And then couple of them in Calcutta, couple of them in Bombay, Mumbai, couple of them in Tamil Nadu. तेरा आवाज नहीं आ रहा। Do you have PPT? I have PPT. Can you please share it? Are you guys able to see? Yes. Okay. So the PPT, okay, so I just kept something called enhancing transparency because whatever I was able to
get through from various people, like speaking to NBFCs. There are 3 NBFCs which I have spoken to. Met couple of them. I'm not able to meet. I'm not seeing the second. I'm not seeing this PPT. I'm seeing this enhancing transparency. हाँ, तो वो पीपीटी में मैं ये सब डाला नहीं है. मैं पीपीटी में सिर्फ थीम डाला है और मैंने ये डाला है कि मैंने क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या बैकग्राउंड था और क्या कंक्लूजन. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग के पास ही होगा, बट की फाइंडिंग्स में ये मतलब आई जस्ट ओके. सो लेट मी ओके. सो बेस्ड ऑन दिस 25 interaction. So key findings में there are something on governance, something on transparency, something on asset quality, repayment and collections, and client profile and attrition. So basically, the thought process of the bankers or the financial institutions or including the rating agencies is that the information coming from the microfinance players is either not up to the mark or they are not able to match the numbers which they are giving to various stakeholders. Okay. And based on my interaction with, so तेरे को वो चाहिए with all whom I have spoken with the name and date, I can do that. You want name? डेट तो नहीं चाहिए. डेट तो नहीं चाहिए. Date नहीं चाहिए ना. So I can give you the name and to whom I have spoken, and I am planning to meet Silvi and one credit bureau, which is either Expedia, Equifax, or Sibyl. Sibyl तो नहीं होगा, but either Equifax or Expedia, because one of my immediate neighbor works in Expedia. He is the head risk. So I'm planning to meet him sometime next week, not this week. Okay. क्या है तुम्हारा? एक है Equifax, another one is Creepymer. Experian के पास ज्यादा डेटा होता नहीं है, ज्यादा एनालिटिक्स होता नहीं है. अच्छा. सबसे अच्छा होता है Equifax या फिर Creepymer. हाँ. Okay, Creepymer में वो ये था एक बंदा था, लेकिन I don't know anyone there now. But let me कौन figure था? out. कौन था वो? I'm forgetting his name. Olas नहीं. अरे वो LinkedIn में है वो. हाँ, LinkedIn में तो वो मेरा भी है. I know him very well. पता हाँ, है. वो I think he's from Orissa, if I'm not wrong, or West Bengal. No, I don't know. But anyway, अच्छा, ठीक है. Subhranshu, So- you are talking about? हाँ? Subhranshu. नहीं. अच्छा. अरे यार उसका I'm not getting his name. With कार्ड ढूंढूंगा तो शायद मिल जाएगा मुझे. Because when I was in MCRIL, I have taken the मतलब साधन मिला था क्या? साधन मिलने आए थे ये लोग. मैं एक काम करता हूँ. मैं नीपा के साथ बात करवा देता हूँ. ओके, ठीक है. Equifax वाली. Equifax वाली है क्या? ओके, ठीक है. ठीक है, मुझे एक मैसेज डाल देना. हाँ, ठीक है, चलेगा. ठीक है. Okay, so basically, so my understanding is my experience on the microfinance space and speaking to various people in the banking space and the microfinance players. तो हर एक बैंक का अपना अपना पॉलिसी होता है एंड वो पॉलिसी के हिसाब से बैंक फॉलो करता है. जैसे कि एक बैंक का है 250 करोड़ के नीचे का पोर्टफोलियो देखेगा ही नहीं. एक बैंक का है BBB- के नीचे पोर्टफोलियो देखेगा ही नहीं. एक बोलता है कि अगर वो स्टार्टअप वार्टअप होगा तो जैसे कि सिडबी हो गया या एनबीएफसी हो गया, जैसे कि यूनाइटर्स और कैस्पियन जैसे लोग हो गए, वो लोग बोलते हैं कि बस 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी, फिर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब चाहिए. ठीक है. सो दे आर नॉट कमिटेड एनीथिंग ऑन द नेटवर्क, बट दे आल्सो गो बाय रेटिंग. ओके, सो रेटिंग में भी ऐसा है कि इफ एमएफआई इज टेकिंग रेटिंग फ्रॉम स्मेरा, then there are a couple of lending agencies, they say that you're taken rating from Smera, so I will give you half 50 basis point higher than what my normal lending are. There are also institutions like this which I came across during my conversation with the microfinance institutions. Sangeeta, please record it. क्योंकि मतलब तुम्हें रिपोर्ट लिखना पड़ेगा ना इसके. ठीक है. Okay, so my key findings, so what Sadhan has to do, or what are the key findings are, I just... So before key findings, I need a kind of analysis that, we are talking about transparency. Correct. Now, when we are talking about transparency, there are two perspectives. One perspective is the lender's perspective. 1% is this MFI perspective.
One perspective is your third party perspective. So there is like lenders, they are talking about that which they are giving, microfinance institutions are giving on this your governance maybe, or transparency, or asset quality, whatever. So it is not good. Like take one by one, like governance. So governance, where is the mismatch of this thing? Like banks are asking something, lenders are asking something, and microfinance institutions are not giving, or they are giving with some this your bad data, or some information they are hiding, or banks Okay. are asking for something which microfinance institutions cannot give. This is one perspective, right? So this is ठीक है. this microfinance institutions perspective. Then maybe there is some in governance, there is like third party objective, third party your this observation. So governance, three types of observation. Now when we are talking about this three observations, we want your observations also, that in this discrepancy what can we do. Okay. So based Like on all the okay. So Seval, what I have done is based on all the three perspective, which is bankers, microfinance institution, and other stakeholders. hmm. I have collaborated all the three and put that what MFI has to do with the banker and with the third party stakeholder to get the funding. No, what we have to do possibly, we have to, I mean, that's the what do you call conclusion. That's your this master conclusion talking to Okay. everyone. Before that, we want also to understand that maybe there is something which is like bankers maybe asking something when you are talking to microfinance institutions, they are telling that we cannot give this one. So, this, what are the challenges over there and how can we overcome? We have to do that one. When we're talking about transparency, bringing transparency in the market, then maybe it's like I'm telling you I'm giving some example. So I was working with a credit guarantee facility with your Asian Development Bank and your Nav Samruddhi. And what happens that Nav Samruddhi, although very dynamic institution during the time of Suparna, but this your ADB was asking for the board's resolution. Now, Okay. this your Nab Samruddhi, they cannot give. They were telling that the portion which is which is related to this initiative, they can send that one, uh, like a kind of like edited like a page editing करके वो भेज सकता है, they will send it. But Asian Development Bank को पूरा चाहिए, which cannot by guidelines this your Nab Samruddhi couldn't give it. So there is a mismatch and it didn't work out. So this kind of discrepancy. So you have to, for example, this one, you have to write that the lenders possibly they have to tweak a bit. Maybe microfinance institutions, they have to talk to their board and come up with some solution of it, like if there is any possibility. So these are the things we want to bring. These are very known factor you are talking about. We know there is this transparency problem in transparency, governance, this your asset quality, everything. We want to understand the discrepancies between the two or three institutions, that what somebody is asking microfinance institutions cannot give. Maybe they are hiding, maybe something that they need to do, they need to be little bit transparent. So all these things we want. This is your this one will convert into a manual lately, like maybe in 1 year we will try to make it a manual, that where how can we make this sector more transparent. So this is your base data, base information. On this, we will be developing the parameters. So these are the parameters we have developed. Microfinance institutions, if they adopt, then it would be better for them for the fundraising. Major problem, देखो, microfinance institutions, they have to accept whatever their lenders are telling. Like majority of that. That's how it works. Like when you write about this job description, at the end you write everything. At the end you write that whatever is guided by the senior management.
So that's the line, right? So in microfinance institutions also same thing happen, but we want more transparency, like the parameter based transparency we want, like governance, like transparency, asset quality. In many cases, these institutions, the lending institutions, they tell that this MFIs, they hide their asset quality. They tweak something in their balance sheet also. That's what also they do. Like in Assam, everybody is having like your par good percentage till now. One institution, I do not want to take the name, they're telling that 100% repayment. Now, how can I believe they're working in the same segment? How can I believe that somebody is having 30% NPA, I mean, par, and some institution is telling that, there is no par, 100% repayment? It cannot happen. So this one, that the institution which is selling that they don't have par, they are fudging the data possibly and sending it to their lenders. So this is what we want to be very clear, that key findings in governance, this banks are asking for this one. Microfinance institutions are, I mean, there is discrepancy. So these are the point of discrepancies from both sides. And third party, they are telling this one. So then at the end of this one, you have to give your suggestion that in each segment, what we have to do. Then when you are giving your this one, then at the end you have to tell that one thing for your business also, you can tell that we have to prepare a descriptive manual on this. So this is what we are looking for. Okay. Okay, so now let me okay, जो मेरा presentation है, presentation पे जो की फाइंडिंग्स है, ओके, सो मान लिया अभी मैंने की फाइंडिंग्स में मैंने गवर्नेंस डाला, ठीक है। गवर्नेंस पे मैंने बोला है कि these are the 5 key points or 6 key points where the MFIs were unable to give the data or unable to provide clarity to the lenders. Okay. Now what I do here is that I will say governance and say what is bankers' requirement and what MFIs are giving or what MFIs have, and then try to do these points. Will that work? हाँ, बिल्कुल. What bankers are asking, what microfinance institutions can provide, or possibly according to bankers is they're hiding. According to banker? According to bankers' view, that they are not providing means they are also hiding something. Okay. Yeah. Okay. And third party, when you are talking about third party, a second, let me finish. When you are talking about third party in the same segment, they may have some view, right? Sorry, third party में क्या When आएगा we are, सर? उसका भी कोई व्यू हो सकता है. They are going for assessment. Now you know it very well, even better than me, that what are they hiding basically? What's the impression of the third party in this segment? हाँ, ठीक है. Okay. Yeah. Sangeeta, over to you. Sir, this slide should be there. In addition, जो आपने बोला है, whatever you are suggesting, you can add all those in subsequent slides. ये slides को आप रहने देना. Basically, we are going for this. हमारा सारा काम को ना, we are trying to put under the heads of governance, social and environment, right? So इसीलिए governance तो आ गया. Then what are the social factors that अभी मुझे नहीं, Sangeeta, hold on. Don't put your this don't put your ESG in this one. Well, it has to be very hard line, like what he has put. Let him be putting in this one. No, Bankers, that they are those banker. Hold on. Bankers, they don't care about your this what social goal and other. They want their lending goes and lending comes back. Don't bring your ESG in this. No, I'm अच्छा not. मुझे Sir, I don't want to put it, make it softer. I want to put, make it harder. Social goal में कुछ है, हम soft बोलते हैं. But then there are hard facts as well. उसको भी आप मैं कीजिए. आता हूँ, अब मैं ESG का एंगल पे लेके आता हूँ, बिकॉज मैं ESG पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ESG का एंगल भी लेके आता हूँ आपके लिए. अच्छा, अभी मुझे एक चीज बताइए कि none of the banker like State Bank of India or any other large bank has not able to give me the policy documents कि आप उनके क्या requirements. Okay, so there is a disconnect between what a banker is asking and what the MFI is giving. So MFI का उन्होंने एक MIS बना के दी दिया, जिसमें गवर्निंग बोर्ड पूछ लिया, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट पूछ लिया, जिसमें
स्ट्रक्चर पूछ लिया। अभी मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके कारण इसको रोका गया है? एक ही हो सकता है कि पर्सनल गारंटी एमएफआई ने मना कर दिया हो, सो विच आई कैन ब्रिंग, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक दे आस्क फॉर पर्सनल गारंटीज ऑफ द डायरेक्टर्स और द बोर्ड मेंबर्स। मोस्ट ऑफ द एमएफआईस आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है, सो आई कैन पुट दैट पॉइंट। बट लार्जर जनरल पर्सपेक्टिव में मैं क्या थीम लेके आऊँ उसमें, मेरे को तो एक ही दो ही पॉइंट मालूम। बिकॉज नॉर्मली बैंक क्या करता है कि बोलता है ये लिस्ट है, इसके हिसाब से आप दे दो, फिर वो रिजेक्ट करना शुरू करता है कि आपका रेटिंग नहीं है, आपका ग्रेडिंग नहीं है, आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हो। वो गवर्नेंस के बारे में या एसेट क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। जो मैंने what I did is that I have spoken to very close friends of mine who are into bank and try to understand from them. They are into this space for last 15-20 years, and try to understand from them that what is the challenge for them as a banker to lend to this mid and small MFIs. Then they said all this कि जो मैंने गवर्नेंस में कैप्चर किया है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से आ रहा है कि ये गवर्निंग बोर्ड मेंबर एक रेटिंग एजेंसी वाले के साथ टाइप में है, वो रेटिंग एजेंसी वहां से करा देता है। बट द चैलेंज इज द ऑर्गेनाइजेशन डज द रेटिंग डन बिकॉज सम बोर्ड मेंबर हैज टोल्ड, but that's a conflict of interest because that board member or the rating agency, some part of that particular institution is also part of your institution. I'll give an example. One rating agency has done a rating where the co-founder of the rating agency is on the board of this MFI. So you as a banker or I as a banker, I will say I will not accept this rating report because it's a conflict. because जो रेटिंग एजेंसी से आपने कराया है उसका बोर्ड मेंबर और आपका बोर्ड मेंबर सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑल दिस पॉइंट्स इज व्हाट आई ट्राई टू कैप्चर अंडर द गवर्नेंस एस्पेक्ट्स। तो अभी मेरे को या तो एसबीआई से वापस मिलना पड़ेगा या किसी दूसरे बैंक से मिलना पड़ेगा कि बस और कौन कौन से रिजेक्शंस होते हैं, जैसे कि नेटवर्क में हो गया रिजेक्शंस, पोर्टफोलियो क्वालिटी में रिजेक्शंस हो गया, पार 4% के ऊपर गया तो नहीं करेंगे। So I can put that points and then I can elaborate that this is how it is. चलेगा? ठीक है। हाँ सर। हाँ, so what I'm trying to tell, like governance के अंदर सब पैरामीटर्स हुआ है, right? हाँ, तो सब पैरामीटर में what's the perspective of bank, what's the perspective of microfinance institution? Like conflict of interest you are talking about, so bank will tell that this is they cannot lend them because this is the thing. Then your on the board members, friends and relatives, this is another board members having limited knowledge on overall operational performance. So what's bank's perspective on it, and what are the challenges? Like if it is small institutions, most of the board members are very handpicked, right? Correct. So possibly they do not understand these operations, they do not understand governance, they do not understand. For the sake of being there, they are there. And microfinance institutions, they are also having upper hand. So this is the response from the bank. Now there can be a response from the institution. As I have worked for several years in the field, like field level operations, so I can understand microfinance institutions. They don't get good quality of this board members because it has also cost, right? So then what is the point of rating agency? This example, like what is the point of rating agency of this board member on this governance side? They may tell that even in your this smaller this one, they may get couple of, this is for example, so in this smaller this circle, they may get some person who is bit what do you call, like bit initiative. I mean, state level consultant, maybe some people in that society who are little bit, what do you call, oriented, they're little bit, they can give you some perspective. Maybe this your people are telling that one, but microfinance institution may not do that one. It may not be palatable for them because they are having upper hand. So this is the transparency, overall transparency. So you as a third party, you have to be very candid. Where are we standing? So it is not to means in your final presentation, we will sit together and we will see that what exactly is over there. Maybe something we have to edit and delete, but we want your candid your this response on that. Okay. Okay. तो बाद में हम लोग delete करेंगे, that's a different story altogether. क्योंकि सब कुछ बोल नहीं सकते ना. चलेगा. Okay, fine.
तो मेरा जो so key findings में I have worked on actually 5 themes, which is governance, which is transparency, data transparency, which is asset quality, which is repayment rates and collections, and which is also related to client profile and attrition. Okay. Now, broadly, what I got into this one is that how an MFI can address these the requirements of the banker or the various other stakeholders, so that they are transparent in terms of data providing to the financial institutions for funding. Now, the challenge for me is how many mid and small MFIs will be able to do this. इसलिए मेरे को mid and small MFIs के साथ बात करना था. Okay. For example, I come to asset quality. Okay, asset quality and collections is what people have told. Many bankers have told. Currently, what is happening is on the asset quality, no one knows what is 30, 60, 90 day par. जो भी collections आ रहा है उसको on time दिखा के डाल दिया जाता है. ठीक है. Borrower को बैंकर बोलता है कि एक borrower है. But MFIs, they do have very specific data, whether it is 30 days, whether it is 60 days. No. I'm coming to that. Okay. ठीक है. तो अभी एसेट क्वालिटी में अगर मान लीजिए कि मेरे पास 30, 60, 90 डेज 180 डेज का डीपीडी है. ठीक है. अगर ये डीपीडी मेरे को कलेक्शन से मैच नहीं होता है. ठीक है. क्योंकि कलेक्शन जो मेरा रीपेमेंट डेट एंड जो कलेक्शन है और जो मेरा एसेट क्वालिटी वो मैच इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मेरा कलेक्शन है उसमें प्रीपेमेंट भी आएगा और ओवरड्यू भी आएगा. हाँ, श्योर. समझ रहा है. ठीक है. तो मेरे को ऐसे बैंकर मुझे ये नहीं पता कि जो अमाउंट उसने 100 जो आज 100 रुपए कलेक्ट करना था जो उसने 100 रुपए कलेक्ट किया है उसमें कितना ऑन टाइम है, कितना प्रीपेमेंट है और कितना ओवरड्यू है. No, but MFIs give that data na, on the basis of their calculation. No. Most of the MFIs, mid and small MFIs, they don't have. So does it mean that they don't have capacity or they willingly don't give it? What's your insight? My sense is that one is that the capacity is not there, or second is that I don't see that willingness of not giving. Maybe they are not how to put it. Maybe they are not capable to get that data from the it means that the capacity problem is there. Yeah. ठीक है. अभी एक so one banker asked me कि सुधीर एक borrower है जिसने आज लोन लिया, सिर्फ 15,000 रुपए का आज लोन लिया, 3 महीने के बाद उसको एक टॉप अप लोन दे दिया गया 5,000 रुपए का. ठीक है. Now tell me the repayment rate of 15,000 rupee loan which that borrower has taken 3 months back. But now that the same borrower is taking loan from different 4 or 5 MFIs. How can you say that repayment rate of this particular borrower is 95% when the same borrower is taking money from different MFIs and top up is given? No, but it is in the account of the different institution that whether they are paying or not. So, I mean, one institution may not be having all the data, but the specific institution, they do have their own data. Correct. They can always tell that one. Correct. So they are not able to give the data of top up borrowers. कि आपने कितना टॉप अप किया. तो क्या होता है कि टॉप अप का भी डेटा होता है माइक्रो फाइनेंस के साथ, because top up loan is very dicey loan, so for that reason they do have all the data. Why they are not giving it? What's the perspective of the bankers? Exactly. I mean, what's the perspective of the microfinance institution? If you have to talk to microfinance institutions once again, please do talk to them. That bankers are telling this one. So what's your perspective in this? Do you give this one? मेरे को ना जो जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग से मैं बात कर रहा हूँ, they are mid MFIs और they know what the matter is. अभी जो तेरे जो मिड एंड स्मॉल जो तेरे साधन के डेटाबेस में जो मिड एंड स्मॉल है, ठीक है, उससे बात करके पता करना है कि वो लोग डेटा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगर नहीं निकालते तो क्यों नहीं निकालते. Then only the solution will come. इसलिए मैं तेरे को बोल रहा था कि अगर मेरा MFIs के अगर कलेक्टिव 10-15 MFI या 20 MFI के साथ मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो then it makes me comfortable saying that कि MFIs क्या डेटा दे सकता है, क्या डेटा नहीं दे सकता, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा. हाँ, ठीक. और जो bankers and lenders what they are telling. So banker, you do have this your
these parameters, right? Parameters and sub parameters. Please do see. Correct. So sub parameters. So under the sub parameters, yeah, I mean both of the side, both means three sides you can do the analysis. Banks are asking on this sub parameter this. MFI's response is this. Third party's response is this. At the end of the day, your suggestion maybe this is a way out. So when we talk about the suggestion, then in this this your conference, our this lenders meeting. So they will tell that the bankers is this, or your this MFIs will tell this, है ना? करेक्ट. तो मेरे को ऐसा कहीं एक बैठ के मतलब घंटे मतलब कुछ करना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन करना पड़ेगा या पर्सनल करना पड़ेगा, बट या ऑनलाइन कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है. तो दैट इज वन रिक्वायरमेंट, बिकॉज बैंकर्स का पर्सपेक्टिव मुझे मालूम है, बट एमएफआईज का कहाँ पे व्हाई बैंकर्स आर सेइंग नो. वन मेजर थिंग इज दैट रेटिंग, बट रेटिंग छोड़ने के बाद क्या? ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव द सॉल्यूशन फॉर both these parameters on the asset quality. Now I am a mid-size MFI. I am having a portfolio of 50 crores. Okay, I'm just giving a hypothetical example. Okay, I have my portfolio in 5 districts of one state. Okay, rating agency will junk you saying that you have only portfolio in one state, so the risk is more. Okay, the rating will be whatever 4 or 5, whatever it is. Now, how will MFI will be able to pitch this to a banker? Okay. Now, MFI will say that my portfolio is say 50 crore in these 5 branches in this particular, in 5 districts of this particular state. इसमें green zone is this, red zone is this, yellow zone is this. और वैसे भी होटल्स My portfolio in this particular state, green zone is say around 40 crores. Remaining 10 crores is in yellow and red zone. Where when I'm saying yellow and red zone, I am taking the reference from market pulse data which has published sometime back by SIBI, where district wise allocation has happened on red, green and yellow. This is one way, and they can also depending tell on that number of MFIs present there, and the borrowers are taking from the same MFIs. Right. They can also tell that you know, we are not going horizontal, we are going vertical, that the last person should get this one, although their risk is high, but still this is we are doing. उसमें भी आ रहा हूँ, ठीक है. So now if I do that, तो मेरा red, green, yellow में हो गया, then बैंकर को मालूम पड़ेगा कि पास इसका 90% पोर्टफोलियो ग्रीन पे है, वहां पे उसका ठीक है, मतलब दैट MFI is able to track the portfolio. मैंने रीपेमेंट कलेक्शन दे दिया. अभी मैंने क्लाइंट प्रोफाइल भी निकाल लिया कि बॉस मेरे जो मैं डीपर पेनिट्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम बोरोवर्स आर से X%, सेकंड टाइम बोरोवर, थर्ड टाइम बोरोवर, दिस एंड माय टिकट साइज ओनली 20,000. तो बैंकर गेट्स अ कंफर्ट सेइंग दैट कि बॉस 10-15,000 रुपए फर्स्ट टाइम बोरोवर, सेकंड टाइम बोरोवर है, तो आई मे बी एबल टू टेक द कॉल. Which may not the case today, but if so, my theme of all the 5 themes is coming from that particular one data which is going into multiple level. One. Second is the branch wise specific, your sector wise specific, and your borrower wise specific. First time borrower में कितने defaulters है, second time borrower में कितने defaulters है, ठीक है. सेक्टर में तेरा कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, ट्रेडिंग सेक्टर खराब कर रहा है या लाइवलीहुड अच्छा कर रहा है, पार सेक्टर का पार निकालो, बिकॉज तुमने तो ग्राउंड लेवल डाटा को ट्रैक कर लिया, तो तुम्हारा सारा का सारा डाटा मैप हो जाएगा. बोल रही है कि होटल तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में तो मेरा ट्रेडिंग से पार आ रहा है, वो भी इस स्टेट से आ रहा है. ग्राउंड लेवल माइक्रो लेवल डेटा just 1%. So banker gets a comfort that 99% of my portfolio is good, which is green and yellow, and other borrowers are first and second time. That is what the theory of my presentation actually. Yeah, so bankers का the challenge or whatever Bandhan was saying, because Bandhan से बात तो नहीं हो पाई अपनी, Bandhan was saying कि उनका डेटा गड़बड़ है. This kind of data help them. Is what I wanted to understand from them. तुमको कैसा डाटा चाहिए कि तुमको समझ. Only I need another 10 minutes for this, huh? ठीक है, तो एक कॉल कर लेगा तो देन आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बैंकर्स का तो व्यू मुझे मालूम है, MFIs का एंड अदर स्टेक होल्डर्स का आई कैन पुट आउट, देन आई कैन. So what you do possibly, that's how I work personally, put it in a matrix. So these are the parameters, these are the sub parameters.
On the right side, you write banker's view, then you say MFI's view, then you say third party's view, and then you said that observations. हाँ, ठीक है. हाँ. So, okay, so I just want to quickly run through one more, this one where I have prepared an Excel, it's a detailed Excel, which I want to, ये presentation में बंद कर रहा हूँ because the theme is like that, ठीक है? ठीक है, ठीक है. Okay. Okay, Excel दिख रहा है? Okay. Now अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक्टिव ग्रुप्स लिया है, ग्रुप में रूरल कितना है, अर्बन कितना है, मेल कितना है, फीमेल कितना, ये किया है, ठीक है? मैनेज पोर्टफोलियो में भी सेम किया है. So I have categorized general information, asset quality information, which is your on-time repayment rate, ऑरेंज कितना जोन है, रेड कितना जोन है, ग्रीन कितना जोन है, 30, 60, 90 कितना कितने पे आता है, ठीक है? सेक्टर वाइज स्पेसिफिक कर दिया है, मतलब पूरा का पूरा बना लिया मैंने, सेक्टर वाइज स्पेसिफिक कर दिया है, क्लाइंट वाइज स्पेसिफिक कर दिया मैंने. Why did you do this one even? ठीक है, so this is what. Why did you do it? Why? Why did you do this analysis? Okay, so this analysis, if MFI says कि बस हमको क्या लेवल पे डेटा चाहिए, so ऐसे कि बस तुमको एसेट क्वालिटी ये लेवल पे डेटा चाहिए मुझे एज ए बैंकर, to be more transparent, to be understanding that this is my transparency level. मान ले कि मैंने तेरे को सिर्फ ज्ञान दिया कि बस रेड येलो जोन निकाल, 30%, 90%, 60% कहाँ से आ रहा है. One MFI is able to track this data. You are telling that on the basis of your observation, after talking to 3 sides, your observation is these are the parameters, these are the reporting possibly. If we do that one, then there will be more transparent in the transparency between all sides. Correct. Okay, then it makes sense, lot of sense. Yes. Yeah. So I have already prepared that. ठीक है. That's okay. Good. That's after your observation, master observation, it will come, right? Correct. Directly. ठीक है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करो हमें. Excel is too long. जो भी डाटा निकाल सकता है मतलब अगर एक माइक्रो लेवल डाटा एक फाइल एक बंदे का बन रहा है तो पूरा का पूरा डाटा निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा. Then what we do possibly once we develop this Excel, we can vouch it. We can get a kind of what do you call going through. We can talk to one bankers that if we get all these data on all these parameters, will it be transparent, more transparent? That we have to do it in lenders meeting. We have to get the lenders meet, or we can do a kind of presentation and we can bring together 1-2 bankers and ये भी हो सकता है, या फिर if you do have very confidential, like not confidential, if you have very confident a banker who is in your confidence that he will not misuse this one. So if they do have, then you can also check with them. Then we can also send it to one of the MFIs and get their view that this can be done, this cannot be done, right? Correct. 1 or 2 MFIs. You can also talk to 1-2 bankers. That is, so that's the way we can do it. ठीक है ना? Done. तो मैं चेंजेस कर लेता हूँ एंड देन मेरे को आप MFI का मीटिंग फिक्स करा था, उसके बाद मैं फाइनल कर दूंगा प्रेजेंटेशन. MFI का मीटिंग इंपॉर्टेंट है, ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल कुछ भी कर ले. नहीं कौन वाला मीटिंग? MFI के साथ डिस्कशन. ठीक है, MFI क्या फेस कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन मिल सकता है, क्या क्या प्रोजेक्शंस कहां से. वो तो इंडिविजुअल MFI के साथ बात करना पड़ेगा. इंडिविजुअल MFI के साथ इंडिविजुअल MFI से जब मैं बात करता हूँ, तो दे आर नॉट गोइंग इनटू दैट लेवल. दे आर सेइंग कि हमारा रेटिंग के कारण ही वो लोग फंडिंग नहीं कर रहे हैं. So they blame the rating agency, which should not be the case. Sir, but even in rating agency also gives them report that where exactly their discrepancies are there. But rating agency का discrepancy they will oversee if it is a financial rating, or when I say if it's a credit rating. Okay, there is a difference between a credit rating and a grading.
ठीक है, जब मैं क्रेडिट रेटिंग करता I know हूँ तो that मेरा, one. Yes. हाँ, तो जब मैं क्रेडिट रेटिंग करता हूँ तो मेरा जो नंबर्स है, जो मेरा फाइनेंशियल नंबर्स है और जो मेरा एसेट क्वालिटी है, उसके बेसिस पे मैं करता हूँ, Hmm. ठीक है। एंड कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कैपिटल पोजीशन का, कि तुम्हारे पास Capital कैपिटल structure. कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कि तुम उसको कितना कितना लॉस वेट, मतलब कैसा एब्जॉर्ब कर सकते हो, लॉस को ग्रोथ कर सकते हो या लॉस एब्जॉर्ब कर सकते हो। जितना ज्यादा कैपिटल उतना अच्छा रेटिंग। So what we can do possibly, there is a way out, I'm telling you. So हम लोग couple of good MFIs को लेकर आएंगे और you get the Sangeeta, you have to mute yourself. So what we can, Sangeeta, you have to mute yourself. म्यूट कर कर दिया? हाँ, कर दिया. So what happens that you develop the parameters and sub parameters, then you get the view of the bankers. That bankers are telling this one, है ना? Hello. ओके ओके ओके। Then when we will present it to the MFIs, we will tell that these are the things. Where are we standing? So आप एक बार दो तीन MFIs के साथ ये कर लो, क्या नाम है, इंडिविजुअल बात कर लो, उसके बाद हम लोग उसका मीटिंग बुलाएंगे। वो तो बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन टेल देम एंड दे विल कम। सो हम लोग बात कर लेंगे, करके हम लोग बोलेंगे कि कुछ एमएफआईज ऐसे बोल रहे हैं, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस। Otherwise, if we don't give them some headway, they will just tell everything in one go. You're getting my point? You are on mute. You are on mute. हाँ, please tell. कैसे करना है, कैसे करना है, इसको वन ऑन वन करना है या ग्रुप में करना है? नहीं, what I'm trying to tell you, first you do the get the banker's perspective. Sangeeta, listen it properly. First we will develop the parameters. You develop the parameters and sub parameters. आपका तो parameters already create होके रखा है. Then you get the sub parameters done. Then in these sub parameters you talk to bank. So you will be getting banker's perspective in it, in all the parameters and sub parameters. Then you talk to 1-2 MFIs. Then you try to get the response on that, right? That the bankers are telling this, where are you standing? Is it true or not? Then we will organize a meeting and then you present this one. Okay. ठीक है? Then your this microfinance institutions, don't tell them these are the observations from the MFIs. Ask them that what's your view. Then after that you tell if there is any difference in the view. Then you can tell that one. Yeah, please tell. Okay. Bankers may be enough. The challenge is if I am going to public sector, private sector bank, how come they have this is very clear guideline उनको लेने होगा। surprising? Go to States of India whether this parameter works or not. If collected decision, decision is not supposed to go to jury also, right? We are not getting you. We are losing you. Okay, let me try to put it the other way around. Bankers may, if we go to private sector banks, there are certain benchmarks. Policy says that 250 crores, 500 crores MFIs को तुम छुओगे. So private sector banks have no. Okay. Now come to public sector banks. Public sector banks also say that BBB minus rating is mandatory. There is no cutoff. 100 crores is the portfolio cutoff for State Bank of India. ठीक है? जो भी 100 crores नीचे होगा उसके नीचे उसको वो lending नहीं करेगा. ये का पॉलिसी है. ठीक है? Now you come to SIDBI. Okay, SIDBI DFI. They say कि बस 10-15 crore 3 साल का probability होगा मैं lending कर दूंगा. They should we take this Excel format to HDI or SIDBI? No, it should be your this first this your public sector bank, and public sector bank if they're telling that BBB के नीचे हम लोग नहीं लेंगे, then you talk to this your this what do you call rating agency. They will give you the parameters. Okay, fine.
you also know that one, that which are the parameters affecting. But if you can talk to other this your colleagues from the same industry, they will tell that they get triple B because of this reason, right? So this Correct. is reason, and these are the major parameters. These are the sub parameters. Now, when you are talking about this one, then you take it forward. Then you ask this your microfinance institution that banks are telling this one, and your requirement is this, but you are giving this. So for that reason, you are not getting the right kind of rating, and also banks are not liking to this. और बैंक के साथ ना आप जब बात करोगे तब उसको पूछना कि ये तो आपका है, रेटिंग तो है, रेटिंग छोड़ के आप लोग जैसे इसमें गवर्नेंस है, इसमें ये है, ये हमने सब पैरामीटर्स हमने बनाए हैं, इसके ऊपर आपका व्यू क्या है? रेटिंग तो ठीक है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तो मोटा मोटा बोल के भाग जाएगा, तो वो मोटा मोटा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा बारीक चाहिए. So State Bank of India, I can reach out to any other bank you want to suggest? So you check our Bharat Microfinance report, maybe major 3-4 banks. SBI है, उसके अलावा एक और कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पब्लिक सेक्टर में। हाँ, और कोई बैंक है? मतलब देखो, वो सब बैंक वी कैन ऑल्सो टॉक टू देम, बट यू कैन ऑल्सो टॉक टू देम, बट कौन वाला बैंक है उसमें है, तो मेजर 3-4 बैंक्स के साथ बात कर लो. ठीक, बात करता हूँ। करके you are getting our point, right? Yeah, I'm getting the point. Yes, But because bankers we want to bring more transparency between the two this your ever fighting groups. चलेगा। ठीक है. ठीक है। सर मेरा Okay. एक पॉइंट है कि ये जो आपने एक्सेल शीट बनाया ना बहुत अच्छा, लेकिन उसमें डमी डाटा डाल के, मतलब जो भी आपके व्यू पॉइंट्स होंगे ना, डमी डाटा डाल के आप उनको दिखा सकते हो कि ये ऐसे करोगे तो ये रेड आएगा ही आएगा. लोगों को ये भी नहीं पता होगा ना कि ऐसा हमारा है, बहुत अच्छा नंबर दिख रहा है, फिर भी ड्यू टू प्रोपोर्शन एंड ऑल इट बिकम्स रेड हो जाता है. तो इनको नहीं समझ आता, बट बैंकर्स कैन अंडरस्टैंड कि ये यहाँ ये गॉन केस है, इसको नहीं करना, राइट? ऐसा तो अगर मैडम कुछ हो. जैसे मैडम सेबल ने बताया था ना, ये अपने को, ये जो मैंने जो बनाया है, अपने को एक एमएफआई के थ्रू रूट करना पड़ेगा, और एमएफआई का सर जो डमी नाम है डेटा, उसको हम लोग, हाँ जी, डमी डेटा देना पड़ेगा सर. रियल डेटा देंगे ना तो शायद कुछ. नहीं, रियल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप, मैं एमएफआई के थ्रू रूट करूंगा, अगर ये एमएफआई निकाल ही नहीं सकता ऐसा डाटा, तो बैंकों को डेटा देके मतलब नहीं है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है. समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए कि मेरे को एसेट क्वालिटी के बारे में पता करना है कि बॉस तू 99%, जैसे सेबल बोलता 100% है, मैं उसको बोलूंगा कि बॉस तू मेरे को पता है कि रेड ग्रीन येलो में कितना है, और तेरा सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो में 90-60 कितना है, और मेरे को ये भी पता है कि तेरा बोरोवर कितना डिफॉल्ट कर रहा है। वो तीन डेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक ही डेटा को तीन तरीके से बांट रहा हूँ, तीनों का आउटपुट एक ही है, लेकिन वो आउटपुट 1 आने के लिए बराबर सब बराबर है कि नहीं देखने के लिए मेरे को 3 में बांटना पड़ रहा है। ओके, ठीक है सर. समझ रहे हैं? तो मेरे को ये अपने को रिजर्व में सैंपल देके नहीं कर सकता, इसको कोई एक लाइव इंस्टीट्यूशन के पास जाके उसके पास डाटा होगा तो निकाल देगा। अगर वो बोरोवर, देखिए सिंपल से चीज है, अगर वो एक बोरोवर का पूरा प्रोफाइल बना के वो ट्रैक कर रहा है, तो सारा का सारा बोरोवर बना के ट्रैक कर सकता है, और ये एमआईएस का है, मतलब ये टेक्नोलॉजी या एमआईएस में बन सकता है। अगर वो आप डेटा बैंकर को देते हैं तो हो जाएगा काम, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। बट एमएफआई कर सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ सर, इनका एलओएस एंड एलएमएस ये दोनों ही चलता है हर एक एमएफआई में, राइट? जहाँ तक मैंने देखा है, लोन मॉनिटरिंग सिस्टम और लोन ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बैकएंड से चेंज हो सकता है। अच्छा, ओके। तो हाँ, तो आपको जिस तरीके से आपको एलओएस और एलएमएस करना है हो सकता है, वो डायनेमिक नहीं है। हाँ, तो लेकिन जैसे कि आप जब फाइनली जो बैलेंस शीट वो देंगे उसके साथ तो टैली होना चाहिए ना, ये दोनों जो भी डेटा है। तो सबसे ज्यादा चैलेंज मेरे को, अगर मैं, आई विल नॉट नेम, उससे लार्जेस्ट एमएफआई इन वेस्ट, सॉरी इन ईस्ट, उस 4 डेटा, एक ही डेटा 4 अलग अलग डेटा पॉइंट आया। अच्छा। जब हम लोग ने पूछा कि क्यों डिफरेंट है, हम लोग रेटिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग क्लाइंट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन कर रहे थे। उसमें उसने राइट ऑफ भी किया था, एड बैक भी किया था, फिर उसने पूरा का पूरा ब्रेकअप डाल के निकाल के हम लोग को जब पता है कि ये हुआ है,
उसमें भी डिफरेंस आया। ओ ठीक है, तो काफी डिफरेंस होता है जब वो राइट ऑफ करते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है, फिर राइट बैक करते हैं, फिर वो प्रोविजन करते हैं, फिर नहीं करते हैं, तो काफी सारा डिफरेंस मिलेगा। तो बैलेंस शीट के नंबर से हम लोग को टैली करना मैंडेटरी है जब जो कोई भी रेटिंग एजेंसी या कोई भी ड्यू डिलिजेंस करता है, तो क्योंकि आपका बैलेंस शीट का नंबर एट द एंड ऑफ द डे इज द नंबर व्हिच क्वालिफाइज। Case, like when we were talking about this, then what could be the how bank sees it? How bank sees it, the numbers, okay, If there is so discrepancy, all these things. that is what it is. So Sebal, so what has happened with that MFI is that they have to scout for they have to wait for 6 to 9 months to come out with a clean data and give a banker, or they have to come out with a capital. They infuse capital, then only bankers lend to them. Without capital, they are not lent. What's about the small MFIs? Off balance sheet. Small MFIs, okay. So small MFIs के बाद the challenge will be capital is not there. Okay. Minimum capital है. अभी अगर वो डेटा ये डेटा ट्रांसपेरेंसी से निकाल के सब सारा का सारा पॉइंट डाटा पॉइंट्स में उसका 10 आता है फॉर एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मतलब मुझे मालूम है कि 10 रुपए लोन पोर्टफोलियो पे 1 रुपए खराब है तेरा, 9 रुपए अच्छा है। अभी जब डेटा मैच नहीं हो रहा तो मुझे यही नहीं मालूम है कि बस कितना डेटा खराब है। So there is a suspicion when the data is not matching. तो मेरा जो 10 रुपए का पोर्टफोलियो पे पूरा डेटा मैच कर रहा है और मैंने तेरे को 5 ब्रांच का या 5 डिस्ट्रिक्ट का पूरा ब्रांच निकाल कर पोर्टफोलियो दे दिया है एंड सारे के सारा डाटा पॉइंट्स मैच कर रहा है ऑन ग्राउंड एंड विद एक्सेल एंड ऑल, आई विल बिलीव दैट डेटा बिकॉज फ्रॉम ऑल द डेटा सोर्सेस माय डेटा इज सेम। No, but in that case, how Windows get In that case, how? Windows get Sorry, in that case, how they will get debt? Windows. किंडो संबंध Kindo, okay. Okay, Kindo ka story is something different. Okay, if you have time, I will want to spend some time because I've spoken to an inside guy. The challenge what the Kindo was, there were some 7 people who were monitoring 80% of the portfolio, which is in specified rural branches. Okay, none of the institution have been able to go to the rural branches and track the data. Now, Kindo का जब हम लोग ने due diligence किया था in January 2020, we figured out that data are mismatched. Internal audits are not happening on ground. The data which is coming from the MIS is not appropriate. So bankers should get a sense. तो Kindo केस में डाटा डिफरेंस था सेबल। हाँ, तो banks couldn't identify. बैंकर ने डाटा चेक ही नहीं किया। बैंकर ने ना डाटा चेक किया, बैंकर को ना उसने रेटिंग रिपोर्ट दिया जो हम लोग ने रेटिंग रिपोर्ट बनाया था। बैंकर को सिर्फ उसने पर्सनल गारंटीज पे लोन लेता गया, वो पर्सनल गारंटी देता गया, लोन लेता गया। Okay. ठीक है, एक वो हुआ। दूसरा उसका मैंने ये भी पूछा था बिकॉज आई स्पोकन टू अ वेरी So can without telling the name, can we also write this story as a case study? That without telling the name, that you can. there was a prominent bank, the transparency, where lies the problem of transparency? Okay. So there, yeah. So one more thing he has told to address this transparency is that whenever a bank gives a loan to an MFI, the NOC में उसका चार्ज क्रिएट होता है। मतलब ROC में रजिस्टर ऑफ कंपनीज में उसका चार्ज क्रिएट होता है बिकॉज बैंक का जो एसेट्स है, जो एसेट्स क्या होगा, जो लोन दिया है वो जो लायबिलिटी है वो उसका एसेट्स हो गया, गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री बोरोवर्स का पैसा है। तो किसी ने भी कोई भी बैंक ने
संबंध के अगेंस्ट में जब लोन दिया तो आरओसी में चार्ज क्रिएट किया, वो देखे नहीं कि कितना यूटिलाइज किया उसने। Important point. समझ रहा है? ठीक है, अगर वो चार्ज क्रिएट किया वो देखा होता तो बैंक नहीं दिया होता लोन, किसी ने नहीं देखा, एंड उसके एडवांटेज उसने लिया। So it can be a case study for bringing more Can be a case study. transparency, Yeah. transparency in the system. So it is not only we are looking for supporting microfinance institution, it is also to support the banks. Banks are also our member, Exactly. right? Yeah. So Yeah. we want to develop a sane institute, a sane and suitable and efficient sector. Good. Done. ठीक है, और तुम कितना सोच रहे हो ये कितना होगा तुम्हारा, कितना पेज का रिपोर्ट बनेगा? तो पीपीटी बनाने को बोला, पीपीटी बना के दे दूंगा तेरे को मैं। 15-20 पेज नहीं, आएगा। रिपोर्ट चाहिए हमें। रिपोर्ट क्या तेरे को एक्सेल पेज पे चाहिए, वर्ड पे? वर्ड पे रिपोर्ट चाहिए ना, तो हम लोग इसको देखेंगे, इसको आगे कैसे ले जाएंगे। ये जो पीपीटीज है वो पीपीटीज तुम एनेक्चर में दे सकते हो, बट वी नीड अ रिपोर्ट फ्रॉम योर एंड। कितने इंस्टीट्यूशन के साथ बात किए हैं एंड ये सब बातें आया है। माय व्यू इज दिस आफ्टर टॉकिंग टू देम। आप जो ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, ईच जो आप पीपीटी में दिखाओगे कि ईच ये में क्या नाम है, गवर्नेंस वाले में आपका व्यू, बैंक्स का व्यू क्या है, आपका व्यू नहीं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का व्यू क्या है, थर्ड पार्टी का व्यू क्या है, एंड व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन। सो यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन इट। ठीक है। हाँ, सो वो रिपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी मैनुअल वी कैन प्रिंट also. If we get the money, then we can also print this document. This is going to be a very good document as I can envision. So when it is there, we try to get money and we try to do this one. बनाता हूँ, रिपोर्ट बनाना शुरू नहीं किया, बना देता हूँ, बन जाएगा। And Also Also bring bring in in accountability in the accountability in the sector. sector. बोलना मैडम? I Accountability. think Sangeeta. मैडम आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी सर कि अकाउंटेबिलिटी भी हमारे मेंबर्स में आएगा बिकॉज ऑफ दिस मैनुअल ना, अपने खुद देख पाएंगे। बिकॉज आप बोल रहे हैं कि बड़ा एमएफआई था, फिर भी दे हैव इनकंसिस्टेंसी इन डेटा, मतलब कहीं पे मैनिपुलेट किया तो उनको पता होना चाहिए, कंट्रोल में वो होना चाहिए कि यहाँ पे किया है, तो देन द अदर डेटा आल्सो गेट्स इम्पैक्टेड। उसको वो नहीं कर पाए तो छोटा कहाँ करेगा। तो देखिए मेरे ख्याल में छोटा कर लेता, बड़ा बड़े के चक्कर में निकल जाता है। यस लेकिन वो जिसके पास पैसा नहीं, देखिए कहावत है ना, जिसके पास पैसा उसी को पैसा आता है, ये वहां पे प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हमको बताना तो पड़ेगा कि आप ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे ना आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ ठीक है, तो मैं बनाना शुरू करता हूँ, रिपोर्ट बनाना शुरू करता हूँ मैं। यस और फिर अपना ये बैंक का मीटिंग के बाद में इसको, बैंक का मीटिंग और एमएफआई का मीटिंग में करते हैं इसका, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीक पे टच बेस करता हूँ कैसे आगे लेके जाना है। ओके थैंक यू चल ठीक है, थैंक चलो बाय बाय। Thank you very much. या बाय।